Good morning, everybody. In the previous lecture, we have studied about marketing information system and marketing research. We have studied about marketing information system and marketing research. When we speak about consumer, it is very necessary to find out what exactly consumer expects. We have to produce a goods which consumer wants. We don't have to produce the goods which we are capable of, which we want, which we like. So it is very necessary to find out what exactly the needs of the consumer in this particular changing environment. Dear students, if you will do the research properly, if you have a proper marketing information system, if you have a proper database of the clients, if you have a proper database of the target audience, it is easily and it is very much appropriate to find out what exactly consumer wants. And if we produce such product in a proper way, it is possible that our product may have long and healthy life. We should expect our product to have a long and healthy life. We want our product to survive long, because once the product enters the market and the time when the product retires from the market or goes out from the market, it is a journey of a product. It is a long journey of a product. We expect a product must have a long and stable journey. Longest the journey, better and highest the profit. Longest the journey, highest the profit. So it is necessary to understand how to give the best facility to the customer by giving the best of the product, because this is the win-win situation for both customer and company. This is the positive situation for both customers and company. So when we speak about the product, every product has a life. Same like we, human being, has a life, the product also has a life. जैसा हमारा जन्म होता है, हम स्कूलिंग ग्रोन अप होते हैं, हम एजुकेशन कंप्लीट करके मैच्योरिटी पे जाते हैं, हमारा पूरा लाइफ का करियर होता है, हम हमारा पूरा लाइफ स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं, एंड एक समय आता है कि हम हमारे जॉब से रिटायर हो जाते हैं, और रिटायर होने के बाद का भी हमारे लाइफ का एक तवक्का रहता है. तो जैसा हर ह्यूमन बीइंग का एक लाइफ साइकिल रहता है, वैसा हर एक प्रोडक्ट का भी एक लाइफ साइकिल रहता है. उसे कहा जाता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. इन शॉर्ट, it is known as PLC. In short, it is known as PLC, Product Life Cycle. Now, dear students, when we speak about the product life cycle, what are the stages of a product life cycle? Basically, in this chapter today, we are going to discuss about, in this particular module today, we are going to discuss about the two things. Number one, we are going to discuss about the two things. Number one, what is product development stage? What is product development stage? Number two, what is product life cycle? प्रोडक्ट का लाइफ तो तब शुरू होता है जब वो मार्केट में एंटर होता है. प्रोडक्ट का लाइफ तब शुरू होता है जब वो मार्केट में एंटर होता है, लेकिन वो प्रोडक्ट एंटर होने से पहले भी तो उसका एक लाइफ होता है जब उसका डेवलपमेंट किया जाता है. यानी कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट
होने के बाद ही प्रोडक्ट लाइफ साइकिल शुरू होगा। प्रोडक्ट डेवलपमेंट होने के बाद ही प्रोडक्ट लाइफ साइकिल शुरू होगा। Until and unless we are not able to produce a product, the life of the product will not start. So first we have to decide on the development stage of the product. Once the product development stage is over, we will introduce the product in the market and will go ahead with the existing product with the life cycle. Try to understand, dear student, any product, whatever we are producing, their product is an outcome of an idea. Until and unless you are not having a better idea, until and unless you are not having a proper and innovative idea, you will not be able to produce a product properly. You must have a proper idea. You must have a proper design. You must have a proper structure. Before entering into the market, you must enter with such a product that will give you the maximum life and the maximum profit. Students, for this we need to have a proper survey. For this we need to have a proper marketing information strategy. We need to have a proper plan. We need to have a proper goal. Until and unless we are not having a proper thinking about the product, until and unless we are not having an innovative and unique product to sell in the market, we will never able to gain the benefit of that product life cycle. And if the product is outcome of innovative idea, if the product is outcome of a research, if a product is outcome of a proper marketing information system, it is definitely that product will have a long and stable life. So we have to produce such a product which will have a long and stable life. So dear students, the marketing information system and the marketing research which we studied in the previous lecture is very much helpful to decide about the product life. So as I told you, our particular chapter is divided into the two important aspects. Number one, product development stage, and number two, product life cycle. The two things which we need to understand is product development stage, and we have to understand the product life cycle. Now, first is product development stage and second is product life cycle. When we speak about the product life cycle is of 4 phases. The day the product is ready to enter into the market, and when the product enters into the market, the first stage is product introduction stage. The first stage is product introduction stage. The second phase is product growth stage. The second phase is product growth stage. The third phase is product maturity stage. The third phase is product maturity phase, and the fourth phase is product retirement or decline stage. The fourth stage is product रिटायरमेंट और डिक्लाइन स्टेज। हर एक प्रोडक्ट जब मार्केट में एंटर होता है, मैं बात कर रहा हूँ मार्केट में एंटर होने के बाद की, सबसे पहला इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट होता है, मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ है, अभी तक ज्यादा लोगों को पता नहीं है, हम हेवी एक्सपेंडिचर कर रहे हैं प्रमोशन पे, एडवर्टाइजिंग पे, हम हेवी टू हेवी मार्केटिंग कर रहे हैं, हम ट्राई कर रहे हैं मैक्सिमम लोगों तक पहुंचने की, हम कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट हम इस पर्टिकुलर स्टेज में लेके आए। So introduction के टाइम पे don't think about the profit, just think about creating awareness about the product in the minds of the people. मैक्सिमम आपको लोगों के माइंड में अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी क्रिएट करनी है। That is the ultimate goal of the first stage, that is product introduction stage. As soon as you are going through the introduction stage, once you will able to enter into the growth stage, the growth stage is an important phase, because here how much you will grow, how much customer you will be able to develop,
how much people you can be able to attract, how much customer you are able to attract, how much new customer you can able to create. There are two things which is very important as far as customer is concerned. Number one, how to मेंटेन द एग्जिस्टिंग कस्टमर. अभी जो हमारे कस्टमर है उसको हम मेंटेन कैसे करें. एंड नंबर टू, हाउ टू क्रिएट अ न्यू कस्टमर, हाउ टू मेंटेन द एग्जिस्टिंग कस्टमर एंड हाउ टू क्रिएट अ न्यू कस्टमर. These are the two challenges. So while introducing any product in the market, it is very necessary to understand how you will grow your market by attracting the existing as well as new customer in the market. So dear student, the growth state here, your sales will increase, your people who are connecting to you will increase, the more people will come and join you. ज्यादा से ज्यादा लोग आपके पास आएंगे. अगर यहाँ पे आपने उन लोगों को प्रॉपर सर्विस नहीं दी, then that will be the biggest loss to you and biggest loss to the product. आपकी इतनी मेहनत जो है प्रोडक्ट बनाने में वो पूरी वेस्ट हो जाएगी अगर यहाँ पे आपने आपके क्लाइंट को प्रॉपरली हैंडल नहीं किया तो. सो इट इज व्हाट अ ग्रोथ स्टेज. जैसा उसका नाम है वैसा ही उसका काम है. It goes, it increases the sales, it takes it to the certain level, highest. Now, in this stage, you will develop a loyal customer. You will develop a customer with a loyalty. Means what? The loyal customer will repeat your purchase, who comes again and again to purchase your goods. So, this is the what basically the stages of the product life cycle: product introduction stage, product growth stage, product maturity. Now, after product grows, product reaches to the height, product goes maximally, you start earning the profit, you become famous, you are promoting your product, and now people have accepted your product and you have developed a customer, clients, fixed, loyal clients who are regularly purchasing your product. The time will come, you will be at the highest point of your sales. You will be at the topmost position of the sales, peak point of the sales, and that peak point is nothing but you have achieved a maturity. You have achieved a maturity. Your matured behavior is observed. Your matured level is observed. यहाँ पे आपका सेल्स भी सबसे ज्यादा है, कस्टमर बेस भी सबसे ज्यादा है. ग्रोथ में जितना प्रॉफिट बढ़ा शायद उतना नहीं बढ़ेगा, स्लो रेट से बढ़ेगा, but you are at the top most level, your sales is higher, your market share is at a very good position. इसे कहा जाता है maturity stage. And when the maturity stage is going on, it is the right time to think about the another product to be introduced in the market, because try to understand, because the product which is at the maturity level now, there is a chance that another product may come and take over this position. So at this moment, it is necessary that you must be ready with the another product to be introduced in the market. So you only replace your own product. दूसरे कोई आके, दूसरे कंपनी आके तुम्हारे प्रोडक्ट को कंपटीशन करके अपने प्रोडक्ट की मार्केट बना के जाए, then why not you only compete yourself? You must be ready with your own product. Why other company may come and enter into your market and break your existing status? So दोस्तों, then the day will come, slowly you will come out of the maturity stage, you will come out of the peak stage, and your product start declining. The sales of the product starts declining slowly, and you will enter into the decline phase, or we can say product retirement phase, decline phase or product retirement phase. In the retirement phase, the product is about to go, but here also you can try, also you can maintain, also you can focus, also you can establish a kind of a strategy, a kind of a policy, a kind of a structure which will help you to keep yourself
maintain in the decline stage also, so that you can sell out existing stocks available with you. आपके पास जितना stocks available है, you are in a position to sell that stock. You know why? Because once the product will go out of the demand, once the product will go out of the demand, you will not be able to sold out your existing available stock. So dear student, basically in this chapter, we are going to understand two important things. Number one, product development stages, and number two, product life cycle. When we speak about the product development stages, it has a process, it has certain things which is must to enter into the market. More the perfect the product development stage is, more the strongest the product development stage is, more the accurate and perfect the product development stage is, you will have strongest product life cycle. You will have more longer product life cycle. So आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज को फोकस करना है, परफेक्टली चलाना है और मोर एक्यूरेट बनाना है. नाउ एक सिंपल सी बात है, इफ यू हैव अ प्रोडक्ट which is a need of the market, demand of the market. For example, when there was a pandemic situation which was, we have started suffering from the corona pandemic situation somewhere in the end of the March, it was immediately we have a demand for the mask and the sanitizer. There are so many companies who entered into the manufacturing of a sanitizers and masks. What it means? Obviously, it was a huge competition. Obviously, there were so many companies who are producing the same product. Yeah, even same product with a different flavor, different color, different design, different shape, different level of strongness, different level of content. It was the right time. That was the right time to introduce such product in the market because it was a need of what? समय की जरूरत थी. तो जब भी उस समय की जरूरत थी कि हमें ये प्रोडक्ट को लेके आना पड़ेगा, आएंगे तो हमें चांस है कि हम अच्छा प्रोडक्ट बनाकर मार्केट में और भी प्रॉफिट गेन कर सकते हैं और भी प्रॉफिट निकाल सकते हैं, मैक्सिमम प्रॉफिट ले सकते हैं. और बहुत सारी कंपनी ने लिया भी, बहुत सारी कंपनी ने लिया भी. मैं तो यहाँ पर कहना चाहता हूँ, बहुत सारे जो कॉटन काइंड ऑफ इंडस्ट्री जो उन लोग का कपड़े मैन्युफैक्चर करने वाले थे, उन्होंने तो मास्क मैन्युफैक्चरिंग चालू करके इतने बड़े पैमाने पे सप्लाई करना शुरू कर दिया कि दे गॉट अ ह्यूज प्रॉफिट आल्सो. At the same time, medical industries enter into the producing of the sanitizer at a faster rate. It was also found there are some duplicate sanitizers are also available. So this is the right time. You have to find out the opportunity. You have to find out a proper time when you can properly enter into the market and get the opportunity to enter the market and grab the situation by taking the advantage of availability of whatever you require about the product and in the market. So, dear students, in this chapter, we are going to understand the two things: product development stage and product life cycle. When we speak about the product life cycle is a four phases. Product introduction stage, product growth stage, product maturity stage, and product retirement or decline stage. So these are the four phases we need to understand in this particular chapter. Now we go ahead with the product development stage. To understand the product development stage, you have to understand the particular chart. Now this is the most important chart as far as to understand the product development stage. Now just see,
Did you understood till here whatever I spoken to you? आप लोग सुन रहे हो? समझ में आ रहा है आपको? मैं जो बताने जा रहा हूँ वो again I'm telling you this is very important question from examination point of view. बहुत बार एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आया. What is product life cycle? What is product development stage? What are the phases of product life cycle? Say yes or no in the chat box so I can understand you are with me or not. Yes, Swapnali, Saidi. Yeah, Priyanka. Again, Saidi, Swapnali again. Swapnali More, Swapnali Priyanka Karakmal. Thank you, Sejal. Shweta, Mansi, Utik. Thank you very much. So, now, try to read this particular chart and understand what exactly this chart means too. We are talking about the product development stage. The product development stage, as I told you, the product development is very, very important. So now, when we speak about developing a product, the first thing comes while developing the product is idea generation. Idea generation. That's a little point of time. Idea generation. Thought process. क्या क्रिएट करना है, क्या बनना है, क्या चाहिए मार्केट को, स्टडी करना. पहले आइडिया करो. आइडिया होना चाहिए. अभी बहुत सारे आइडिया माइंड में आए, नोट डाउन करो. 3 आइडिया, 4 आइडिया, 5 आइडिया, 10 आइडिया. देन स्क्रीनिंग करो इंडिविजुअल आइडिया को. देन यू हैव टू स्क्रीन, चेक, फाइंड आउट individual ideas. That is known as idea screening. Then comes concept development. Then comes concept development. As far as the idea is generated, as far as the idea is screening properly, you have to develop a concept. जब तक आपका concept clarity नहीं रहेगा, आप अच्छा product नहीं बना पाओगे. It's simple. Until and unless customer is not knowing what exactly the product is about, you will not be able to produce it. Then comes market strategy. Strategy of the market. What exactly the market is all about. How you will enter into the market. जो आइडिया जनरेट किया है उसको हमने स्क्रीनिंग किया. स्क्रीनिंग करने के बाद हमने कॉन्सेप्ट डेवलप किया. कॉन्सेप्ट डेवलप करने के बाद हम सोच रहे हैं कि मार्केट में अटैक कैसे करेंगे. हाउ आई विल एंटर इनटू द मार्केट. व्हाट विल बी द स्ट्रेटजी. देन कम्स feasibility study. Very important. Feasibility, viability. Is the product is feasible? Is the product is viable? क्या मैं प्रॉपरली प्रोड्यूस कर सकता हूँ, क्या मैं प्रॉपरली सेल कर सकता हूँ. अकॉर्डिंगली यू नीड टू हैव अ प्रॉपर प्रोडक्ट डिजाइन. वी मस्ट हैव अ प्रॉपर प्रोडक्ट डिजाइन. हमारा प्रोडक्ट का डिजाइन भी परफेक्ट होना चाहिए. Then we are having the proper test marketing. ध्यान से सुनना. जैसे कोई भी चीज या तो कोई भी फूड आइटम्स जब हम घर में बनाते हैं, हमारे घर की महिलाएं किसी को सर्व करने के पहले उसको थोड़ा टेस्ट करते हैं. नमक बराबर है, मिर्ची बराबर है, टेस्ट बराबर है. क्यों करते हैं? एक बार हमने लोगों को वो परोस दिया, सर्व कर दिया, उसके बाद उसमें चेंज लाना बोले तो इट्स नॉट गुड. ऑल्सो चेंज ला सकते हैं बट पीपल हैव गॉट इट कि प्रोडक्ट बराबर नहीं है. तो तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि कोई भी प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने से पहले उसको प्रॉपर टेस्ट करना चाहिए. कुछ सैंपल के ऊपर उसका यूज करा के उसको टेस्ट करा के देखना चाहिए कि वेदर दिस इज प्रॉपर और नॉट. And ultimately you are supposed to enter into the market entry. Now you are entering into the market. Finally you are entering into the market, and the day you are entering into the market, product development stage over and product life cycle शुरू होता है. Are you getting what I mean to say?
सो दोस्तों ध्यान से समझने की कोशिश करना. फॉर एग्जाम्पल, टुमारो यू आर स्टार्टिंग विथ एनी कंपनी और एनी बिजनेस. दिस पर्टिकुलर चार्ट विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट. क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको आइडिया जनरेट करना पड़ेगा. कि एग्जैक्टली व्हाट इज नीडेड इन द मार्केट. फिर से पढ़ता हूँ. एग्जैक्टली व्हाट इज नीडेड इन द मार्केट. मार्केट में क्या चाहिए. हमें वो प्रोडक्ट बनाना है जो मार्केट में चाहिए. हमें वो प्रोडक्ट नहीं बनाना है जो मार्केट में नहीं चाहिए. मार्केट में क्या चाहिए वो तूने चेक कर लिया. अब दूसरा स्टेप, हाउ डू वी मेक दिस प्रोडक्ट बेटर. ये प्रोडक्ट को और बेटर मैं कैसे कर सकता हूँ. हाउ डू वी मेक दिस प्रोडक्ट बेटर. ये प्रोडक्ट को और अच्छे से मैं लोगों तक कैसे लेके जा सकता हूँ. हाउ कैन आई डू दैट. ट्राई टू अंडरस्टैंड. सिर्फ ये नहीं देखना है कि मार्केट में क्या चाहिए, बट साथ में ये भी देखना है कि इसको और बेहतर मैं कैसे कर सकता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, यू आर ट्राइंग टू एंटर इनटू द सेल फोन इंडस्ट्री. कौन सा प्रोडक्ट बनाने के लिए आप इंटरेस्ट बता रहे हो. यू आर ट्राइंग टू एंटर टू प्रोड्यूस अ मोबाइल सेल फोन. सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू चेक कौन से मोबाइल मार्केट में मिल रहे हैं और मेरे मोबाइल में खास क्या होगा. What will be speciality in my mobile? Why people should come and buy my product? लोग मेरे प्रोडक्ट को खरीदने क्यों आए, क्यों खरीदे मेरे प्रोडक्ट को. That also we have to understand. How do we make this product better? Then comes idea screening. कितने सारे आइडियाज जो हमारे पास है वो आइडियाज को हमें स्क्रीनिंग करना पड़ेगा. स्क्रीनिंग में हमें समझ में आएगा, डू कंज्यूमर वांट दिस प्रोडक्ट. क्या कंज्यूमर को ये प्रोडक्ट चाहिए. रियली कंज्यूमर वांट दिस प्रोडक्ट. क्या कंज्यूमर को रियली ये प्रोडक्ट चाहिए. हमने तो सुना व्हाट इज नीडेड इन द मार्केट, लेके भी आए आइडिया, सोचा भी 10 आइडिया लेके आए तो ये भी हमने सोचा है कि इसको और बेहतर कैसे बनाएंगे. बट स्क्रीनिंग के टाइम पे पहला क्वेश्चन आपको क्या आना चाहिए आपके माइंड में, पता है क्या. डू कंज्यूमर वांट दिस प्रोडक्ट. रियली कंज्यूमर इस प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं. नंबर 2, वो कॉम्पिटिशंस एग्जिस्ट आउट इन मार्केट. ये कॉम्पिटिशन इसका और कितना है, कितने लोग ऐसे हैं जो ये प्रोडक्ट बना रहे हैं ऑलरेडी, कितने कंपटीशन में चल रहा है, तो कितने कंपनीज चला रही है ये प्रोडक्ट. यू टू फाइंड आउट. यू कैन नॉट जस्ट स्टार्ट एंड कोई भी आइडिया सिलेक्ट करके चलो प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दो. नो, it is necessary to find out, do consumer want this product and what kind of a competition exists, what kind of a competition is there in such product range. इसको कहते हैं स्क्रीनिंग ऑफ आइडिया. आइडिया को प्रॉपरली स्क्रीनिंग करना अकॉर्डिंग टू आइडिया जनरेशन, according to screening of idea. Now the time has come to develop the concept. Now when we speak about the concept, what is concept? Concept is a kind of a model which you have to present in front of the customer using, for example, creating a prototype. So consumer can see, consumer can feel, कंज्यूमर कैन अंडरस्टैंड कि भैया ये प्रोडक्ट है. ऐसा डिजाइन है जैसे कि मोबाइल लेने जाते तो उसका डेमो पीस होता है. सैंपल एट द सेम टाइम जब आप लोग कोई कार खरीदने जाते हैं तो सैंपल हाउस रहता है कि भैया फ्यूचर में मेरा घर कैसा होगा, फ्यूचर में मेरा मोबाइल कैसा होगा, कैसा मेरे को प्रोडक्ट मिलने वाला है. प्रोटोटाइप बोलते हैं. क्या बोलते हैं? प्रोटोटाइप. सो creating a prototype so consumer can see, feel, etc. That is called as a concept.
डेवलपमेंट, इसे कहते हैं कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट, बराबर है. देन कम्स द मार्केट स्ट्रेटेजी. Market strategy. Now, your product range is, product quality is decided, product model is decided, sample is decided, the concept is developed. Now the biggest thing comes. Now the biggest thing comes. The biggest challenge comes is about market strategy. Using research to identify target market. रिसर्च से हमें समझ में आया कि हमारा टारगेट मार्केट क्या रहेगा. यू हैव टू एड्रेस हाउ यू विल सेल योर प्रोडक्ट. यू हैव टू फाइंड आउट हाउ यू विल सेल योर प्रोडक्ट यूजिंग रिसर्च टू आइडेंटिफाई टारगेट मार्केट. आपको आपका टारगेट मार्केट समझ में आ गया है बिकॉज आपने इनफ मार्केटिंग रिसर्च किया है, आपने इनफ मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम कलेक्ट किया है. ये सब करने के बाद आपको समझ में आ गया कि आपका टारगेट कौन है. एड्रेस हाउ यू विल सेल टू टारगेट. अब आप लोगों को ये प्रॉब्लम सोल्व करना है कि हाउ यू विल सेल द प्रोडक्ट टू द टारगेट मार्केट. टारगेट मार्केट में आप ये प्रोडक्ट को कैसे मैक्सिमम बेहतर तरीके से सोल्व और सेल कर सकते हो. दैट इज व्हाट योर टारगेट टू बी. दैट इज व्हाट योर टारगेट to be. That is what you need to achieve in a proper way. That is what you can call it as a market strategy. That is what the market strategy you need to adopt. Then comes the feasibility study. When we speak about the feasibility study is nothing but whether this product, whether this idea, whether this strategy, whether this particular concept is feasible or not. Feasible means viable or not, capable or not. Whether हम लोग seriously really ये कर सकते हैं कि नहीं. Whether we are feasible to produce such goods or not. Feasible, can you produce it? Feasible, can you sell it? Is it feasible to produce? Is it feasible to sell? This is the two things which you need to answer whether you are able to produce or whether you are able to sell. So these are the two important things which you need to answer in a proper way. So this is called as a feasibility study. Feasibility का मतलब क्या होता है? Viability. Feasibility का मतलब क्या होता है कि क्या ये seriously तुम कर सकते हो काम या नहीं कर सकते हो. So that is the feasibility study. Then comes product design. Product design is nothing but when you are entering into the market, when you are trying to sell the product, you must have a proper product design here. Adding features to product that consumer wants. Adding features to product that consumers want. आपको प्रोडक्ट के अंदर कुछ ऐसे फीचर्स ऐड करने हैं जो आपके कंज्यूमर को चाहिए. आपको अपने प्रोडक्ट के अंदर कुछ ऐसे फीचर्स डेवलप करने हैं which your consumer want, which your consumer like. आज के जमाने के हिसाब से, मॉडर्न जमाने के हिसाब से what exactly required, how it is required, how to develop, how to produce, सारी चीजें आप लोगों को डेवलप करके ही कस्टमर तक पहुंचानी है. That is what adding features to the product that consumer want. Then test marketing is releasing product to small sample. As I told you, before the product enters into the market, before you are trying to sell the product to the market, it is very, very necessary to test it. Test few samples. Once you are testing the sample, you will come to know what are the drawbacks and the problems in the product. So you have a time, you have a proper time to change, you have a proper time to rectify. You can develop further. वहीं पे आप लोग प्रोडक्ट को रोक दो, 2 दिन के बाद लॉन्च करो, 5 दिन के बाद लॉन्च करो, पर जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता तब तक आप उसे लॉन्च करना नहीं है. That is what you have to test it before it enters into the market. इसलिए क्या लिखा है? Releasing the product to all sample test market to gain the feedback.
इसको फीडबैक, इसका फीडबैक प्रॉपर लेने के लिए यू हैव टू सेंड इट टू द स्मॉल सैंपल एंड टेस्ट इट. Then only you will be able to get the idea about whether your product is proper or no. That you have to run a test marketing, otherwise you will not be able to survive. Then comes the market entry. Then comes the market entry. अब समय आ चुका है मार्केट में एंटर होने का. Now you are ready to enter into the market. So what is that? Releasing the product to the entire population. पूरे पॉपुलेशन के अंदर आप प्रोडक्ट को लेके जा रहे हो. नाउ यू आर एंटरिंग इनटू द मार्केट. नाउ यू आर एंटरिंग इनटू द प्रोडक्ट with the people. So that is what you are reaching to the maximum population, and that is what the market entry. And finally, product begins. Product life cycle. और यहाँ पे आपका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल शुरू हो रहा है. देखो दोस्तों, इन दिस चैप्टर we have to understand the two important concepts. Number one, product development strategies. Number two, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. हमने इस लेक्चर में प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा. इसमें हमने देखा कोई भी प्रोडक्ट डेवलपमेंट करने के लिए we have to follow certain procedure for which we have to run a particular screening, we have to run a particular test so that the product will enter into the market with the more perfection and have a long life. तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल वही प्रोडक्ट का बेहतर रहेगा जिसका प्रोडक्ट डेवलपमेंट परफेक्ट है. सो आइडिया जनरेशन, आइडिया स्क्रीनिंग, concept development, market strategy, feasibility study, product design, test marketing and market entry. और market entry जब हो जाती है तब शुरू हो जाता है product life cycle. In the next lecture we will study about what is product life cycle and what are the phases of product life cycle. There are 4 phases we have to study. We'll definitely take that 4th stage in the next lecture. Join immediately within next 3 to 4 minutes. Don't waste the time. Don't run here and there. We want maximum attendance. Thank you. I'm stopping the session here. Join immediately within next 3 minutes. Thank you.